Hello students, today we will study about the suggestions for enhancing cost of agricultural products. So let's start. For enhancement of cost of agricultural products, some useful suggestions and efforts should be made. The cultivators can be made capable for enhancing the cost of their produce by providing them with requisite money, education, training and management skill. In this respect, the following suggestions deserve careful attention. First, to provide relevant knowledge to cultivators. The cultivators should be apprised of information regarding what type of crops are being grown by different cultivators in different areas and in what ways the cost of their produce can be enhanced, what material will be needed and from where it can be managed, and how the need of requisite money can be fulfilled. Only then they will be adopt these measures. For the accomplishment of this object in the consultation centers for enhancing cost of agriculture produce should be established at various places. To make arrangement for necessary training. Adequate training to cultivators is required regarding preparation of sauce, jam, chips and squash, lest all these products get perished. Apart from this, these products are meant for commercial purposes, so their quality and taste need to be maintained and they should be well preserved. With these precautions, these products will remain safe from ruin and also become popular in the market. They will also gain trust of the customers and a good profit. Financial arrangement. Money is needed to undertake various measures for enhancing cost of agricultural produce. It can be managed in two ways. First, by providing loan and secondly, by financial aid. Cooperative societies, therefore, need to be formed for loan purposes and the government should take steps for providing financial aid. To provide technical assistance. Suitable technical assistance is needed for packing and sealing of finished goods and also for keeping cheese, tofu, etc. fresh. So, suitable technical assistance should be provided to cultivators if and when it is needed. Fifth, arrangement for sale of agricultural products by its publicity and promotion. No industry can bring fruitful results unless its product is provided easy access to a suitable sale, thereby enabling the producers to earn adequate profit. The cultivators can make efforts to enhance the cost of agricultural product, but they do not find themselves capable of managing the profitable sale of their products. The government can, however, make suitable arrangement for such sale by itself or through the cooperative societies. Besides that, the government can also organize exhibitions and fairs for publicity and promotion of such products. The MP government is, however, organizing such publicity programs at various occasions and at various places, but it still needs expansion. Thus, we see that the enhancement of cost of agricultural produce is very helpful in elevating the condition of the villages and village people, and if the government undertakes suitable steps in this direction,
It will certainly prove helpful in strengthening our financial structure. एनहेंसमेंट कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कुछ सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनकी आय को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि उनको सारी जानकारी उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड रिलेवेंट नॉलेज टू कल्टिवेटर्स, कि क्या क्या उनके लिए योजनाएं हैं, किस तरह से उनको फ़ायदे मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाती है। देन टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी ट्रेनिंग, उनको जितने अगर किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो वह प्रोवाइड कराना ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकें। देन फाइनेंशियल अरेंजमेंट, उनको फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी अवेलेबल कराना कि यदि कहीं से उनको लोन चाहिए तो लोन दिया जा सके ताकि वो अपनी जो भी फाइनेंशियल कमी है उसको पूरी कर सकें। देन टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, उनको जो टेक्निकल हेल्प है वो प्रोवाइड कराना, जैसे कि पैकिंग है, सीलिंग है, ये सब चीज़ों की जानकारी उनको उपलब्ध कराना और इसके साथ साथ किस तरह से वो इसे फ्रेश रख सकते हैं अपने सामान को, ये चीज़ें सारी उनको उपलब्ध कराई जाती हैं कि किस तरह से वो कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों की हेल्प उनको की जाती है। देन अरेंजमेंट फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाय इट्स पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, अब उस सामान जो प्रोडक्शन हो गया उसको किस प्रकार से पब्लिसिटी करके और उसका प्रमोशन करके लोगों तक वो पहुंचाई जा सकती है और अर्निंग की जा सकती है। इसके लिए उन्हें जागरूक करना कि वो कैसे करके अपनी सामान की, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करें और प्रमोशन करें ताकि जन जन तक उनका जो सामान है वो पहुंच सके। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे कोशिश भी करती है, जैसे कि हम देखते हैं कि यदि एमपी गवर्नमेंट है जो कि पब्लिसिटी प्रोग्राम समय समय पर ओकेजनली उनको करवाती रहती है जिससे कि उनका जो सामान है, जो उत्पाद है, वह लोगों की नज़र में आ सके।